Hello students, in previous our economics lecture, we had discussed about the law of demand, right? We had discussed that how law of demand works, right? And what are the exceptions and what are the assumptions in law of demand? क्या-क्या उसमें धारणाएं ली गई थी और क्या-क्या उसमें कुछ चीजें रह गई थी, एक्सेप्शंस थे, राइट? वो हमने देखा, राइट, कि हर बार प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से हर बार डिमांड में चेंजेस आए ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? ये चीज हमने देखा था, राइट? सो देयर आर टू मेनी अदर थिंग्स आल्सो इन लॉ ऑफ डिमांड, राइट? So we will continue with this chapter, theories of demand, and we will move forward towards one step, right? And we will see today the shift in demand, right? Shift in demand. Shift means कोई भी changes shift होता है आगे की ओर पीछे की ओर, right? आगे की ओर डिमांड जाती है, पीछे की ओर डिमांड जाती है, तो वो क्या चीज है वो हम देखेंगे, right? Okay, so in shift in demand there are basically 2 points, right? First one is extension and contraction in demand, right? Extension and contraction. Extension means आगे की ओर और contraction means कम होना. Extension means बढ़ना and contraction means कम होना, right? So due to some factors that already we had seen, right, कि प्राइस की वजह से डिमांड में उतार चढ़ाव आ सकता है, राइट? जो हमने ऑलरेडी देखा, तो बस सेम चीज यही है और यही चीज यहाँ पे कहना चाहते हैं, राइट? ओके, बट इन सेकंड पॉइंट देयर विल बी सम डिफरेंस, राइट? अभी हम जो देखेंगे, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है वही देखेंगे, पर थोड़ा और डीप में देखेंगे उसको, राइट? ओके, लेट्स understand that what is extension and contraction of demand. Extension of demand, contraction of demand. Extension का मीनिंग है बढ़ना और contraction का मीनिंग है कम होना, right? Okay, so in first point it's given that when price of a commodity falls, जब price कोई commodity की कम होती है, right, demand of the commodity changes, right? वो डिमांड उसकी क्या होती है, चेंज होती है. दैट वी ऑल नो कि अगर किसी की प्राइस कमोडिटी की कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, राइट? ओके, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, राइट? इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, राइट? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फॉल्स, राइट, so demand will changes, right? Changes means it goes upwards, right? And it is called extension of demand, right? Okay, the second point, but price of a commodity rises, demand of a commodity changes negatively. Negatively means माइनस में जा रही है या तो कम हो रही है, राइट? जैसे प्राइस किसी कमोडिटी की ज्यादा होती है, डिमांड ऑब्वियस है कि कम हो जाएगी, राइट? ओके, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड कम हो गई है, राइट? इसमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ गई है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कम हो गई है, राइट? ओके, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द ओनली रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इन प्राइस. प्लीज स्टूडेंट note here this point. Price. Okay, please ये समझना, यहाँ पे ये पॉइंट आना ही चाहिए. It's necessary, it's compulsory. इसी पॉइंट की वजह से, right, because of this point only, the first point and second point जो हम आगे देखेंगे वो चेंज होते हैं, ये पॉइंट की वजह से ही, राइट? सो प्लीज कंसंट्रेट. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द ओनली रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इन प्राइस. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन प्राइस. दिस इज द ओनली रीजन, राइट? प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में
एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट? दिस इज द ओनली रीजन. ओके, प्राइस इज द बेसिक फैक्टर ऑफ दिस चेंजेस, राइट? जो प्राइस है वही एक फैक्टर है, वही एक बेसिक फैक्टर है कि जिसकी वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, राइट? सो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज only wants to say that due to changes in prices there is a change in demand, right? only price में change की वजह से demand में change हो सकता है, right? price is the basic factor. okay, so previously जैसे कि हमने एग्जांपल हमने देखा था, समझा था, वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, right? in this example we had given the price of 4 rupees, and at the 4 rupees we quantity demanded is 10, right? 10 number of units, and at the 3 rupees quantity demanded, that is of 15 number of units, and at the 5 rupees quantity demanded, that is 8 number of units. So same thing we will put up into this chart, right? okay, so at the 4 rupees quantity demanded is 10. okay, so at the 4 rupees quantity demanded, that is of 10, we had done this, right? ये हमने जोड़ दिया है. 4 रुपीस पे यहाँ पे प्राइस दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? तो 4 रुपीस पे क्वांटिटी डिमांडेड, that is of 10 rupees we had taken it. okay, now move forward. जब प्राइस जो है वो 4 से 3 रुपए हो जाती है, राइट? 4 से 3 रुपए हो जाती है, तब क्वांटिटी हम कितनी ले सकते हैं? 15 नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, 15 नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? 4 से 3 हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, तो ये 3 से लेके हम 15 तक उसको ले सकते हैं, राइट? 3 से 15, 3 रुपीस जो प्राइस है उसमें हम क्वांटिटी 15 रुपए, सॉरी 15 क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स ले सकते हैं, राइट? ओके, देन 3 to 5, ओके, 4 to 5, राइट? अगर 4 रुपए से 5 रुपए हो जाता है, इनकेस अगर प्राइस जो है वो 3 हो जाता है, तो 15 नंबर ऑफ यूनिट्स हम डिमांड कर सकते हैं, और 4 रुपए से अगर 5 हो जाता है, 1 रुपए बढ़ जाता है, राइट? तो हम 8 number of units demand कर सकेंगे, right? So if the price will increase 4 rupees to 5 rupees, then we can purchase 8 number of units, 5, 10 और बीच में 8, right? okay, so here we can see that 4 to 10, 3 to 15 number of units, and 5 to 8 number of units. So now we will draw the curve, right? एक ये कर्व बनेगी यहाँ से यहाँ तक की, और दूसरी कर्व यहाँ से यहाँ तक की बनेगी, right? This is the 4 rupees. So students, हमें हमारी कर्व मिल गई, right? तो अब हमें क्या देखना है इसमें? अब हमें देखना है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, right? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइट? तो डिमांड एक्सटेंड कहां हुई, एक्सटेंशन कहां हुआ कि 4 रुपए से लेके 3 रुपए हो गए, तब हमारी डिमांड क्या हुई? एक्सटेंशन हुई, एक्सटेंड हुई, राइट? तो ये 4 से लेके 3 हुई, तब हमारी यहां पे जो डिमांड है ये क्या हो गई? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, राइट? तब हमारी डिमांड जो है एक्सटेंड हो गई, कहां से? ये 4 से लेके 3 पे आए तब, राइट? तब हमारी डिमांड क्या हुई? एक्सटेंड हुई, एक स्टेप आगे बढ़ी, राइट? एक स्टेप आगे बढ़ी, और जब 4 रुपए से 5 रुपए हो गई, तब हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई, कम हुई, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. So extension and contraction. Okay, student. So price is the basic factor for extension and contraction
demand, right? Price is the basic factor, right? Please understood these things. यहाँ पे हमें एक ही पॉइंट कंसीडर करना है, that is price. Extension and contraction is only due to the price, right? Extension and contraction of demand is only due to the price, right? Price is the basic and only factor for extension and contraction in demand. Okay, so अब आपको एग्जाम्स में जो आप चार्ट बनाते हो, टेबल बनाया है, अब चार्ट का एक्सप्लेनेशन देना है, ये कभी भी भूलना नहीं है, राइट? तो आप एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे चार्ट का? तो सबसे पहले हियर वी हैव टेकन OX as a quantity demanded and OY to price. We have taken this chart, right? So हम यहाँ पे यही लिखेंगे that we have taken OX quantity demanded and OY to price, right? Okay, so we had seen that when the price is ₹4, the quantity demanded is 10 number of units. Okay, then if the price falls to 3, then the quantity demanded, that is 15 number of units, right? Similarly, so there is extension in demand due to the price. Okay, then next one, similarly when the price rises to 1 rupees or price rises to ₹5, the demand contracted to number of units 8, right? Our demand is showing contraction and it falls at the number 8 number of units, right? This should be your explanation towards chart, right? इसमें कहीं चार्ट में कभी भी एक्सप्लेनेशन भूलना नहीं है, right? In this demand curve we can show extension as well as contraction in the demand, right? तो ये सबसे पहले आपको लिखना है OX के बारे में कि आपने OX कौन सा लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? एंड OY के बारे में, देन OY के बारे में, OY कितना लिया है, प्राइस, क्या लिया है, प्राइस. ओके, देन बेसिक प्राइस that is of ₹4. When price is ₹4, the quantity demanded is 10 number of units, right? Okay, when the price decreases or price falls, when the price falls, the number of quantity demanded is 15 number of units. So we can see that there is an extension in demand, right? Okay, then when the price rises, this is the second number of point. When the price of a commodity rises, the demand of commodity changes negatively, right? And we can see that there is a contraction of demand, right? और स्टूडेंट्स एक सबसे बढ़िया आइडिया आपको बता देता हूँ. बढ़िया आइडिया क्या है? यही चीज आपको चार्ट में पुट अप कर देनी है. दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग, राइट? आपके 3 पॉइंट तो वैसे ही हो गए जो आप एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हो, वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, बट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस चार्ट, राइट? आपको एग्जांपल देना है कि भाई प्राइस ऑफ रुपीस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस टू ₹5, बाकी का लिख दो यहाँ पे. इट्स वेरी इजी, right? When the price of commodity falls to ₹3, बाकी का लिख दो यहाँ पे. It's very easy. थोड़ा माइंड अप्लाई करना है, बाकी ये पूरा अपने आप आ जाएगा. सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा 4 पॉइंट है वो लिखना है, राइट? ओके, देन चार्ट टेबल एंड चार्ट, देन चार्ट का एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज यहाँ पे डिस्क्राइब कर देनी है. आपका पॉइंट खत्म हो गया है, राइट? सो एक्सटेंशन एंड contraction of demand, there is a price is the basic factor, and due to the price only
due to the price factor only, there will be extension of demand or contraction of demand, right? When the price rises, the demand extended. When the price when the price falls, demand extended, and when the price rises, our demand will contract, right? Demand contraction हो जाएगी, कम हो जाएगी, right? So after the extension and contraction in demand, the next point in shift in demand is increase and decrease in demand, right? Here you will little bit surprised that what is the difference between extension and contraction and increase and decrease, right? Particularly if I can say, actually there is no any difference in increase or decrease or extension and contraction, right? Particularly there is no any difference, but here due to some other factors other than the price, the name is different, right? You will experience in this point that due to other factors except price के अलावा, right? Not the price. In contraction and extension of demand, only the price factor, only due to price factor, there is a change in demand. But here other factors, price के अलावा जो other factors है, उसकी वजह से like income, taste and preference, whatever changes comes in demand, it called increase and decrease in demand, right? So in law of demand, while understanding the law of demand, we had seen that other than the price, there are other factors also which can influence the demand, right? We had discussed some factors, right, like income, taste and preference, right? Because of this factor, demand can also influence, right? For example, if my income is 10,000 rupees, right, and my demand is 10,000 quantity of units, right? Okay, now the price is set as it is 10,000, whatever the price of 10,000 quantity of units is as it is, but my income rises 10 to 15,000, 10,000 से 15,000 हो जाती है, right? So I can purchase more number of units, right? Instead of 10,000 units, I can purchase 15,000 units, right? Because my income rises, the price of that units is as it is, right? There is no change in price of units, but due to my income, I can purchase more number of units because my salary rises, right? Similarly, if my salary decreases, then I can purchase less number of units, right? So it's a vice versa, right? Okay, this is a matter of income. We can take also taste and preference, right? If I want only Medimix soap, then I want this only. Whether the price of the Medimix soap increases or decreases, it doesn't matter for me, right? Because I like Medimix soap, that's why I want only that soap, right? The price of that factor, that soap or other soap increases or decreases, it doesn't matter for me, right? It doesn't matter for me. So I will use only Medimix soap, right? So this is also another factor, right, which can influence the demand, right? Okay. Another factor, taste and preference only, right? If Medimix soap's price increases, I will purchase the another soap, right? Then the Medimix demand will fall, right? It will decreases, right? So this except
changes comes in demand, it is called increase or decrease in demand, right? Whatever the changes comes in demand except price factor के अलावा, right, whatever the changes will come in demand is called increase or decrease in demand. And when there is a change due to the price factor, we can call it extension or contraction in demand, right? Okay, students, it's the most important to understand here these things, because now things will get more practical, more little bit complicated, right, in terms of charts, right? So please concentrate here, right? You will understand each and everything if you will concentrate here 100%, right? Otherwise you will left some behind. You will take some time to understand the things, right? So please understand what's going on here, right? Okay, now things will get more advanced, right? अब जो चीजें होगी वो कुछ एडवांस में होगी, क्योंकि ये जो चार्ट है वो आपको देखने में, अगर आप एक बार देखोगे तो पता ऐसे नहीं चलेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा उसको, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट. Here you can see the two charts, right? Two charts are there. One we will see about the increase in demand, and in another we will see about the decrease in demand. Okay, here we have taken example of in form of this table, right? And in this table you can see clearly that price is the constant factor. Price में कोई changes नहीं हो रहा है, जो भी changes हो रहा है वो quantity demand में हो रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है? जो other factors है like income, taste and preference, उसकी वजह से, right? Price में कोई changes नहीं आ रहा है, right? Okay, so here I had taken price as a constant factor in both of these charts, in both of this diagram, right? यहाँ पे 10 जो प्राइस है वो भी यहाँ पे 10 प्राइस ही लिया है, right? Okay, then I have taken this first point, 10. When the price is rupees 10, the quantity demanded is 10 number of units. Price is 10, quantity demanded is 10 number of units. And the price is 10, quantity demanded is 10 number of units. Okay, so now we will move little bit forward. When the price is 10, but still we are demanding quantity is 15 number of units. When the price is 10, still we are demanding 15 number of units. तो अब यहाँ पे आप देखना क्या हो रहा है, प्राइस 10 है, राइट? तो ये तो हम यहाँ पे 10 भी रखेंगे. प्राइस इज 10, but still we are demanding 15 number of units. 10 से डिमांड 15 पे गई है, राइट? प्राइस उतनी ही है, डिमांड है 50, डिमांड बढ़ गई है, राइट? तो एक चीज हमें यहाँ पे पता चली, ये हमारी पहली डिमांड कर्व है. दिस इज आवर फर्स्ट डिमांड कर्व, राइट? डी. ये हमारी पहली डिमांड कर्व है डी, से फॉर एग्जांपल डी, राइट? तो अब यहाँ पे हमारी दूसरी डिमांड कर्व बनेगी, राइट? क्योंकि प्राइस जो है वो वही की वही है, पर हमारी डिमांड 10 से आगे 15 पे जा रही है, आगे जा रही है, राइट? तो यहाँ पे हम दूसरी डिमांड कर्व बनेगी, दैट इज D1, राइट? सो वी कैन से दैट हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई है D to D1 पे, राइट? D to D1 पे हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई है. तो इसीलिए ये टॉपिक का नाम है शिफ्ट इन डिमांड. डिमांड क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है.
एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, राइट? ओके, नाउ नाउ सिमिलरली द प्राइस इज ₹10 but demand decreases due to other factors like income, tax and preference, so demand will be 5 number of units. तो यहाँ पे 10 नंबर, ये हमने इंक्रीज वाला पार्ट यहाँ पे देखा, अब हम डिक्रीज वाला पार्ट y नंबर ऑफ चार्ट पे देख रहे हैं। 10 से 10 पे तो था ही ऑलरेडी, राइट? ओके, अब डिमांड क्या कह रही है? 5 रुपए, सॉरी डिमांड जो है वो 5 क्वांटिटी पे आ जाती है इंस्टेड ऑफ 10, तो डिमांड कम हो रही है, राइट? तो पीछे आ जाएगी, यहां से प्राइस उतनी ही है, देखिए प्राइस में यहां पे उतनी ही ले रहा हूं, पर हमारी डिमांड जो है वो कम हो रही है, ये पॉइंट पे आ जाएगा, राइट? ओके, यहां पे हम कोई नाम दे देते हैं, राइट? पॉइंट सी, ये नाम दे देते हैं हम, ओके, राइट? सो हमारी पहली जो डिमांड थी O to B थी, राइट? दैट इज 10 नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ पे पहला हमारा बनेगा, राइट? ये हमारी पहली डिमांड कर्व है D, ओके ओके। देन अब डिमांड क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है, क्यों? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, हमारी डिमांड कम हो रही है, तो वो आ जाएगी यहाँ पे B1, ओके। सो दिस इज द चार्ट, ओके। नाउ एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपको, पूरी जो चीज है एक बार और रिपीट कर देता हूं। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड इनकम, राइट? एक्सेप्ट प्राइस के अलावा, राइट? ओके, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन demand, okay, right? Okay, then here we have taken the one example when you can see that price is the constant factor, price जो है वो 10 रुपए ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड इनकम, उसकी वजह से डिमांड में यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट? 10 प्राइस पे 10 क्वांटिटी डिमांडेड है, राइट? पर चेंज किसी वजह से हो रहा है तो 15 हो रहा है, और कम कई बार हो रहा है, दैट इज ऑफ 5 क्वांटिटी, राइट? ओके, तो सेम चीज हम यहाँ पे चार्ट में पुट अप कर रहे हैं, दो चार्ट हैं अलग अलग, राइट? फर्स्ट वन इज एक्स चार्ट एंड सेकंड वन इज वाई चार्ट, राइट? हमने दो अलग अलग चीजों को समझने के लिए दो अलग अलग चार्ट्स बनाए हैं, right? Okay, so in first one, in OX we have taken quantity demanded, and in OY we have taken price, right? At price of ₹10, the quantity demanded is 10, right? So A to B, right? OB, that is of quantity demanded, that is 10 rupees, sorry 10 number of units, ओके। देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो है डिमांडेड वो 15 हो रही है, राइट? ड्यू टू सम अदर रीजंस एक्सेप्ट प्राइस, क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है? 15 हो रही है, राइट? 15, सो आवर डिमांड विल शिफ्ट फ्रॉम OB टू OC, डिमांड क्या हो रही है? OB से OC पे जा रही है, यहाँ पे OB पहले थी, अब OC पे जा रही है, राइट? और डिमांड कर्व जो है, ये डिमांड कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व, राइट? जो लाइन है उसको कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व। D जो है वो D1 पे शिफ्ट हो रहा है, राइट? यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे OB से लेके OC तक पहुंच रहा है, और डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स D to D1. Please students, it's very easy, but you just need to understand this chart, right? कि कहाँ से कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है, right? Okay.
the quantity demanded, the quantity is shifting to OB to OC due to some changes in other factors like income, right? Our demand will increase. Our demand is increases to 15 number of units instead of 10 number of units, right? Instead of 10 number of units, our demand will increase to OC, right? That is 15 number of units. And similarly the demand curve will also shift from D to D1, right? Okay, now next chart. अब ये चार्ट का एक्सप्लेनेशन देना है, राइट? फ्रॉम चार्ट Y you can see that we had taken OX, that is quantity demanded, and OY, that is price, right? At 10 price, at price of rupees 10, the quantity is demanded 10 number of units, right? Okay, but due to some changes in other factors, like income, taste and preference, the demand is decreases to 5 number of units. The demand is decreases to 5 number of units. So the quantity demanded will shift from OB to OC, जो अंदर की ओर जा रहा है, OB to OC. So the quantity demanded is shift from OB to OC, and as a result the demand curve will also shift from D to D1, right? So from this chart, this table, you can say that due to some other factors except price, like income, taste and preference, right? Income, taste and preference, if there is any change in demand, it is called increase or decrease in demand, right? Students, please, you need to understand these things in English only, because अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी हिंदी या गुजराती में अगर आपको समझाऊंगा तो एग्जाम्स में आपको लिखने में थोड़ी परेशानी होगी, right? So that is why I am explaining all these things in English only, right? I am explaining this diagram in English only, right? So you can write easily in the exam, right? जो भी मैं यहाँ से बोलूँगा वो आप एग्जाम्स में लिख पाओगे, राइट? तो इसीलिए मैंने कहा था कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना जरूरी है, राइट? सो ये चीज यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन ये x और y डायग्राम दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग अलग ही होना चाहिए, राइट? एंड ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन there is a simple thing that we need to understand, that first of all we need to give some brief about the diagram, right? That what actually this diagram is, right? So you can write that सबसे पहली चीज तो यही से शुरू होती है, that OX is indicating quantity demanded and OY is indicating the price, right? ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, राइट? ओके, देन सेकंड पॉइंट, at the price of rupees 10, the quantity demanded is 10 number of units. ये सिंपल भाषा में ही आपको लिखना है, आपको एडवांस लैंग्वेज का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको लिखना है, राइट? at 10 rupees of price, that is point A, the quantity demanded is 10 number of units, that is point B, right? At price of point A, the quantity demanded is point B, right? Okay, this is the second number of point, right? Okay, then third number of point,
due to changes in other factors like income, taste and preference, there is a change in demand. There is a change in demand, right? And the change is the change is to point A, to point OB to OC, right? From point OB to OC, that is 15 number of units. Yeah, polygonal, 15 number of units, right? And hence, as a result, as a result, the demand curve is shifting from D to D1. As a result, the demand curve is shifting from D to D1. Right. So from chart X, we can come to know that there is a change in demand due to other factors, and the change is positive change. Right. Our demand is rises. That's why we can say that there is an increase in demand. There is an increase in demand. Right. Okay. Similarly, the second point, in the Y number of chart, OX is indicating quantity demanded, OY is indicating price, right? From point A to B, from point A, that is 10 number of 10 rupees price of rupees 10, the quantity demanded is 10 number of units at point B, right? Okay. Then second point, if there is any changes due to other factors in demand, right, our demand is shifting negatively towards point OC, right, from OB. The demand is shifting from point OB to OC, right. So as a result, the demand curve will also shift from point D to D1, from point D to D1. So we can say that from the diagram we can see that there is a change in demand negatively. So our demand is decreases. The demand is decreases because there is a change in other factors. तो ये पूरा आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, राइट? तो बस और कुछ है नहीं इसमें, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में आपको प्राइस फैक्टर याद रखना है, और इंक्रीज और डिक्रीज में अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड इनकम। ओके।